Morning, everyone. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Any questions before we start? Okay. So I think I think we discussed about the modeling. So yeah. So what I've done, I've pulled up the real transaction that we did for one of the clients. Because what I've done, changed the name of the client and such that it's not easy for you to identify because from a confidential perspective. Otherwise, what I've done to give you exact size and scale, I've taken actual case for which we'll do live modeling. Okay, but before I show that to you and we start doing this, what I want to explain, how do I want to run these modeling sessions. So now you have to assume. So assume that you are part of the modeling team. So you're part of the investment banking modeling team. Hello, am I audible? Yes, sir, you Hello. are audible. Yes, sir, you Okay. are audible. Okay. So I don't know where it got disconnected. So I will repeat. You have to assume that you're part of a investment banking modeling and valuation team. So that's the first assumption. So I want to do this modeling exactly the same way what we do for the corporate clients from an IB perspective. Okay. So assume that you're part of a investment banking modeling team, and and let's assume I'm a client. I'm a corporate client. Okay. A representative of a corporate client who has come to you for some transaction. ठीक है. अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, it's information that client is sharing
with the investment banking modeling team. So you are part of the investment banking modeling team. I'm a client. I'm sharing this information with you. That's the scenario you have to assume. Okay, we're doing kind of a simulation so that you get a real life understanding how does it happen in the industry. Okay, and then we'll do exact modeling the way we do it in for the corporate or what we did when we did this transaction for this client. ठीक है, इसमें नाम चेंज किया हुआ है, थोड़े नंबर्स चेंज कर दिए हैं, अदरवाइज रेस्ट इज एग्जैक्टली पीस ऑफ व्हाट वी डिड. कुछ पीसेस इसमें हैं जो ज्यादा बहुत ज्यादा एग्जॉटिक है, बहुत ज्यादा एडवांस है. विल सी व्हेन वी रीच दैट स्टेज कि अगर आप वहां तक कंफर्टेबल हो तो विल डू दो पार्ट ऑफ मॉडलिंग, अदरवाइज वो देख लेंगे. ठीक है. Now, so let me give you some context to this. ठीक है. So I'm a client. आप लोग मॉडलिंग टीम है, वो हमारा डिस्कशन हो चुका है. ठीक है. Couple of things I want to just put a context. So do you understand toll business? जो bridge जो tolls होते हैं, I don't know. इंडिया में थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली में सिंगापुर क्लाइंट के लिए किया था हमने. बट अगर मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट दूं तो अगर आपने देखे, थिंक दिस इज रियली बैड. सो when you're crossing a toll, so you have to pay some money and then you are allowed to cross the toll. Have you seen that? Sir, yes, Yes. sir. So वो टोल बिजनेस यही होता है, जो उस टोल को रन कर रहा होता है उसके लिए वो रेवेन्यू हो जाता है. ठीक है. So every vehicle that passes away pays them whatever the toll fare to the toll operator. That's the revenue for them. ठीक है. Now I'm a UK based company. ठीक है. I'm based out of UK. Now मैं client आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. So I'm based out of UK. ठीक है. There is a project. ठीक है. or there is a new there is a new tool that is announced. ठीक है. और सिंगापुर गवर्नमेंट एक टोल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं. ठीक है. एंड वी यूके बेस्ड कंपनी, बट सिंगापुर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जो भी उस टोल बिजनेस के लिए बिडिंग करेगा, बिडिंग समझते हो आप लोग? सो जनरली द गवर्नमेंट व्हेन दे कम आउट विद द न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दे आस्क फॉर द बिडिंग टेंडर्स. तो बिडिंग टेंडर्स में क्या होता है, आप बिड सबमिट करोगे एंड हूएवर गिव्स द बेस्ट बिड टू द गवर्नमेंट, उसको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है. वो क्लियर है बिडिंग कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. सो बिडिंग कॉन्सेप्ट आपको पता है, टोल पता है. ठीक है. टोल बिजनेस क्या होता है. ठीक है. सो आई एम यूके बेस्ड कंपनी. ठीक है. Construction or this toll will happen in Singapore. Singapore government will open this contract, and one of the requirement of this tender is that you need to have a company incorporated in Singapore. Okay. So I'm a UK based company. I will not be eligible from a legal perspective to submit the bid, because one of the requirements is your company should be incorporated in Singapore to be eligible for submission of the bid. So I will float a new company in Singapore for this बिल्डिंग. ठीक है. सो हेंस जिसकी हम मॉडलिंग करेंगे वो पूरा स्टार्टअप मॉडल होगा. इज दिस कॉन्टेक्स्ट क्लियर बिफोर आई शो दिस केस टू यू? कुछ पूछना है यहाँ तक? Yes, मैंने sir. कुछ कॉन्टेक्स्ट लेके है ऑफ सम टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए, जो आप देखेंगे उस केस में आपको मिलेंगे. ठीक है. हाँ दीपक कुछ पूछ रहे थे और यू सेड यस, आई डिडंट गेट दैट. No, it's okay. Just I'm saying it's okay. ठीक है. चलिए. So with this background, I am a client. You are a part of the modeling team. Now I'm sharing the information. Real world में when we do transaction, हमारी client के साथ first meeting होती है. ठीक है.
and who goes and meet the client? ठीक है, जनरली मॉडलिंग, सो एक, चलो डील टीम वो बाद में सिखाता हूँ, चलो डील टीम पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो कहीं पे नोट कर लो, एक पीस बाकी है जो डील टीम का कॉन्सेप्ट होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट पे अप्रोच करता है, एक टीम क्रिएट करी जाती है, ठीक है, वॉल क्रॉसिंग करी जाती है, देन समबडी गोज एंड मीट द क्लाइंट। वो एक पीस है, हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, उस पर। चलिए, सो जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट शेयर कर रहा है, सो आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू, ठीक है, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से इसको पढ़ लो इंडिविजुअली, see what you have understood, see what you have not understood, and then I will explain this everything. Okay, so I'm giving you 5 minutes. Just go through this, what this is all about. Done? Or you need more time? Just give me time.
Okay. Done. Hello, Rishan sir. Hello. Done. Yes, sir. Everyone, because it's very important you go through this well, because it takes few couple of sessions or a little more than couple of sessions. We would be uh, heavily working on this. Okay. And the next part is this. Next part छोड़ दो अभी तो चाहिए तो, so that's not too important. So it says that you need to build model and you need to build all these model. Take care. So let's come back and discuss this now. What this is all about. So now so ये XYZ Infra is the company जो सिंगापुर में नहीं create करी जाएगी for this bidding. ठीक है? As I said, actually the company, the parent company is based out of UK, but you need to have a company incorporated in Singapore to be eligible. Or actually, me even in Indian context में change कर दिए numbers. So let's assume the company needs to be incorporated in India for eligible to submit this bid. And the name of the company on a hypothetical basis is being said XYZ Infra. ठीक है? So ये part
तो यानी हमारा जो क्लाइंट है जिसके लिए हम मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन करेंगे वो क्लाइंट का नाम XYZ इंफ्रा है, ठीक है। सो यानी आई एम फ्रॉम XYZ इंफ्रा, ठीक है। बट ये XYZ इंफ्रा स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं है। सो मैं XYZ इंफ्रा के पेरेंट का रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलने के लिए आया। दैट इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस in terms of the structure of the client and parent, ठीक है। So ये पार्ट मैंने आपको बताया is evaluating the new bid for the construction of the toll road and you discuss what do you mean by toll road, ठीक है। Now Subhash, if you're not speaking, go in mute. Now this this uh this construction or this toll, so the government has said this will work on BOT model. What is BOT model? Is build, operate and transfer. Build, operate, transfer, ठीक है। इंडिया में रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट है, बट मोस्ट ऑफ द मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज generally do these big construction in this model, on this model. So what do you mean build, operate, transfer model? So जो इस केस का जो टाइमलाइन है वो 2016 से लेकर 2024 तक है। आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। और आज 2016 चल रहा है, ठीक है। मतलब जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे बिडिंग करना या सबमिशन, हम जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन उस दिन 2016 होगा, ऐसा एज्यूम करके अगर हम चल रहे हैं। सो व्हाट डज दिस मीन? इस टोल में 3 फेजेस आएंगे। वन इज बिल्ड, and operate. So what does this mean? Whoever wins this bid will first do the construction of this toll. So let's assume the construction of the toll takes 2 years. तो आपने 2016 में स्टार्ट किया, 2018 में आपने कंप्लीट किया इसको। देन आप यहां से यहां तक इस टोल को ऑपरेट करेंगे। What does this mean operate? Which means आप इस टोल से जो भी रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंस और रेवेन्यू होगा वो आपका होगा। Any doubt till this point? Build and operate पे कोई डाउट? ठीक है। And then the last part is transfer. Then at the end of the 2024, you will transfer all the rights of this toll back to the government, which means you will do construction, you will do operate till 24, and then at the end of the 2024, आप ये पूरा construction of the toll and all these rights will hand over, transfer back to the government, and then government will do and will take the ownership of all the expenses and revenue that will come after 2024. That is called as build, operate, transfer. Any question on this? Any doubt on this BOT model? ठीक है।
So we're on the para 1. So XYZ Infra is evaluating a new bid for the tool. Phase 1. So this construction, yani this build part is divided into two parts. So phase 1 का जो construction है 15 months में होगा, expected to be 150 crores. Phase 2 का जो construction है वो 12 months में होगा, construction cost is expected to be 60 crores. तो यानी total duration जो है वो 15 month and 12 month expectations में है, ठीक है, which comes out to be somewhere around 27 months, ठीक है, इतना टाइम आपको एक्सपेक्टेड है. From a cost perspective, 150 plus 60, 210 crore is what you're expecting from a cost. Any doubt in the first pair? 27 months and 210 crore is what you're expecting. ये कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्लाइंट के लिए हमने कैसे किया, सब कराऊंगा. बट आई एम जस्ट फर्स्ट वांट टू रन थ्रू दिस, आपको धीरे धीरे मॉडल समझ, केस समझ आए before we get into the number crunching. Any doubt in first pair? Guys, am I audible? Yes. Okay. So in case no question on the first, second, I'm just doing the first, the plain reading and the discussion. In the first round, I'm not getting into a number. हमने कैसे calculate किया? I will come back and explain each and every component. How do we calculate this? Okay, but let's just first go through the first round of the reading and just understand what this is all about before we get into the number crunching. So keep that in mind. Second para. So out of total cost of 210 crores, 125 would be funded through debt. So this 125 will be from debt, and remaining कितना हो गया? 85. That will come from equity. ठीक है. इंटरेस्ट रेट आपको 15% दे रखा है, ठीक है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में देखेंगे. यू वांट टू डू दिस और नॉट. रियल ट्रांजैक्शन जो हमने करी थी उसमें ये सब चीज ये था, ठीक है. बड़ी काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आगे जाके एक्सेल में, तो विल सी करना. बट इसका मतलब ये डेट वुड बी रिलीज वंस द एंटायर इक्विटी इज एग्जॉस्टेड. सो व्हिच मींस जनरली टिपिकली नॉर्मल ट्रांजैक्शन में ऐसे नहीं होता है, ठीक है. इसके लिए वाटरफॉल कैश फ्लोज बनते हैं, okay. But what does this mean? That if you've gone to the bank and asked for a loan, bank will give you loan only when your equity is exhausted, okay. They will not give you loan unless you still have not spent your entire equity, okay. So generally most of the developed countries में banking sector में इस तरीके से work किया जाता है. Okay, we'll come back to this and discuss कि क्या है और इसका implication क्या है if we decide किसको रखना है, ठीक है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने आपको कराया नहीं है, तो ये पार्ट को भी छोड़ दे. लेवल 2 का पार्ट है, ये भी हमने किया नहीं है, सब इवैल्यूएशन में यूज होगा, तो इसको अभी के लिए पार्क कर देते हैं. एनी डाउट इन द सेकंड पैरा? Okay. Third, company will be allowed to operate the tool till 2024
ये मैंने आपको बताया, build, operate, transfer model. Company is expecting daily traffic vehicle of 2 lakh vehicles per day at 16 levels. So which means per day, the company is expecting the 2 lakh vehicle will go from this vehicle. So from this tool, which means this becomes my quantity demand per day. Okay, and this demand is, or the traffic is expected to increase 5% per year. Any doubt in third para till this point? First two para talks about the build phase. Third para talks about the operate phase. कि जब operations आपका start होगा, so तब जो भी traffic होगा, उस पे you're expecting 5% increase every year. ठीक है. The toll, जो real transaction, what we did for the client, उसमें ये toll fare mention नहीं था. ठीक है, वहां पे ये X mention था. But अभी के लिए मैंने आपके लिए 10 rupees रखा है. We'll come back to this and discuss. So toll fare is expected to be 10 throughout the period of the operation. Okay, so which means if when a vehicle passes through the toll, the vehicle driver or owner has to pay 10 rupees for per trip. Any question on third para? The project started in 2006, for example. 1st January 2006, we have started the project. 16 is what we will start the project. And we are means the data says that 2 lakh vehicles will be per day in 16. Correct. So this data of 2 lakh will from some search or how सिखाऊंगा. So every number that you're seeing on the screen, I will come back and explain कैसे calculate करते हैं. That will be probably round 2 or probably round 3 of this discussion. So not only 2 lakh, 5%, जो भी आप नंबर देख रहे हैं सब आपको सिखाया जाएगा कि कैसे रियल वर्ल्ड में कैलकुलेट होता है. Any other doubt in third para? Okay. Fourth. Annual operating cost after commercialization is expected to be 10 crores and likely increase 5% every year. So once you enter into operate phase, so कोई operations का खर्चा तो तब भी होता है, correct? So first part is a construction cost, and then second is an operation, the operation maintenance, the running cost for the toll. ठीक है, so उसका 10 crores है. ठीक है, likely to increase by 5%. Again, this 10 crore is given at 2016 levels. Any question on the fourth para? In the fourth para? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला. So in this, you will be doing two parts. One is the construction and second is the running or operations of that toll. So the first two paras हैं तो आपकी construction की details given है.
कंस्ट्रक्शन करके जब आप इस टूल को लाइव लेके जाओगे, ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम दैट, तब उस पे कुछ मेंटेनेंस रनिंग कॉस्ट तो इंकर करोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, वहां पे जो स्टाफ होगा उनकी सैलरी है एंड स्टफ लाइक दिस, तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ईयर 10 करोड़ से। इसमें सर आपने बोला था कि जो हम लोग बिल्ड करेंगे वो 2016 से 18 में करेंगे, और जो करेक्ट। ऑपरेशन करेंगे वो 2018 से 2024 तक करेंगे। तो इसमें ऐसा ये मैंने वाली ऑपरेटिंग, 2016 से 2018 एक एग्जांपल दिया था मनमीत। अब वो एक्चुअल डेट क्या है अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बट लेट्स एज्यूम अगर 2 साल कंस्ट्रक्शन में लगते हैं, 2018 तक खत्म होगा, ऐसा एज्यूम, ऐसा अभी एक एग्जांपल दिया है, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा मॉडल में है वो भी नहीं बोला है। बोलो ओके ओके ठीक है। उसके बाद कुछ पूछ रहे थे मतलब तुम। हाँ, उसके बाद सर अब समझ में आ गया सर, मुझे लगा ना कि जो ऑपरेशन है वो 2018 से, बट इसमें 2016 लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया, ठीक है। नहीं, ऑपरेशन 2018 या 2019 जब से वो स्टार्ट होगा तभी से खर्चा स्टार्ट होगा, बट केस में वो नंबर आज के 2016 के लेवल के हिसाब से दे रखा है, तो हमें इसे एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा, कराऊंगा आपको। ओके Now I have a question in para 1. पैरा 1, ओके बोलिए। फेज 1 और फेज 2 का ऑपरेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? What is included in phase 1? What is included in phase 2? Phase 1 में कितना means, because if this project is divided into, whether we'll be able to take the hit of 2 lakh vehicles of revenue or not, will it come up in phase 2? ठीक है, How the पार्क करो इस क्वेश्चन को, विल कम टू दिस। नेक्स्ट पैरा, द डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन इज अराउंड 10%, ठीक है, टैक्सेशन रेट इज 30%, ठीक है, ये अभी सिंपल है, इसमें खास है नहीं, ठीक है। सो सॉरी, so should I remove this before I have to erase this before I go to next, because it's थोड़ा सा messy, I don't know कितना comfortable है read करने के लिए, so I will clean this up. Now we're looking at this last para, ठीक है। ये अभी हम करेंगे कि नहीं करेंगे वो अभी बाद में डिसाइड होगा, ठीक है, ये, ठीक है, बट इसका मतलब समझ लो आप। So it says, under the terms of the loan would be dispersed after the sponsor spends all his equity towards the project। सेम चीजें जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, ठीक है। So which means आपको लोन तभी मिलेगा जब आपने सारा पैसा अपना इक्विटी का खर्च कर चुके होंगे, पैरेलल नहीं मिलेगा, ठीक है। जनरली इंडियन मार्केट्स में आपको पहले मिल जाता है, ठीक है। एंड देन ये तो हो गया लोन मिलेगा कैसे, इसको अलग कलर में कर देते हैं। सो ग्रीन इज लोन मिलेगा कैसे, अब लोन की रीपेमेंट कैसे होगी, वो येलो है, ठीक है। सो रीपेमेंट ऑफ द लोन would be paid purely from the cash flows of this business. What does this mean? This mean, now this is again not a typical loan that we do in Indian markets, okay, except few ECB or FCCB loan. But what does it mean कि जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में क्या होता है, आपकी EMI फिक्स हो जाती है, जो आपकी जैसे होम लोन है, होम लोन में क्या होता है, आपकी EMI फिक्स है, 10 रुपीज की अगर EMI है, तो बैंक इज नॉट बॉदर्ड अबाउट योर सैलरी, योर इनकम, वेदर यू अर्न मोर वेदर यू अर्न लेस, आपको 10 रुपीज की EMI पे करनी पड़ेगी,
That's the way the Indian banking sector operates right now. Okay, but some of the more developed economies, they do more exotic or structure kind of index. ठीक है, so वहां पे कैसे होता है, वो बोलते हैं ठीक है आप ईएमआई पे करो लोन का, और वो ईएमआई को लिंक कर देते हैं आपके रेवेन्यू से. So when you earn more, you pay more. You will earn less, you pay less. When you don't earn, you don't pay. समझ आया इसका मतलब क्या है इस लाइन का? What do you mean by this line? If you don't earn, don't pay me. If you earn more, pay more. If you earn less, pay less. Any doubt in this line? ठीक है, last line. Once the entire loan is repaid, then आप डिविडेंड पे कर पाएंगे. यानी आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते जब तक लोन रिपेमेंट नहीं होगी. इसको वाटरफॉल लोन स्ट्रक्चरिंग या वाटरफॉल कैश फ्लो बोला जाता है. ठीक है, सो कुछ पूछना है लास्ट पैरा में? ठीक है. Now, Are we going to model based on the fluctuation of cash flow also? हाँ, उसी को लिंक किया हुआ है इसमें. सो विल सी वेदर यू वांट टू डू दैट. वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा दीपक. सो इसलिए मैंने रखा है It's एक्सेल. because मैंने last 3 lines is to that. Yeah. What I understand is Correct, related correct. to, because if you'll model this straightforward with these data, it will, the third line will be straightforward what we are doing for EMI part in India. करेक्ट. सो दोनों चीजें इसमें प्रॉब्लम है. सो पहला ये रीपेमेंट वाला इशू है, इसको अलग कलर में करते हैं. ठीक है. देन दिस येलो इज अ इक्विटी डिविडेंड पेमेंट, वो प्रॉब्लम है. और जो थर्ड और ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है ग्रीन, कि वो लोन ही नहीं देगा जब तक आप इक्विटी खर्च नहीं करोगे. सो तीनों चीजें लिंक हैं. लिंक मतलब the one variable computation is linked to something else. For example, loan का inflow is linked to the equity outflow. ठीक है, so that is first. Second is repayment of the loan is linked to the cash flow of the project, and distribution of dividend is linked to the repayment of the entire loan. ठीक है. So अगर हम लोग इतना पहला पार्ट कंफर्टेबली जो ये इतना है ये अच्छे से पुल अप कर पाते हैं कंफर्टेबली, एंड यू एज अ बैड आर कंफर्टेबल व्हेन वी रीच दैट स्टेज कि नहीं सर ये वाला कॉम्प्लिकेशन भी ऐड करना है, तो कर लेंगे. इफ अगर हमें लगता है नहीं इतने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, वी हैव प्रॉब्ली फील किया ये ही बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्ली विल सी. तो इसलिए मैंने इसको भी ऑप्शनल रख के चलते हैं. ठीक है, मैं हटा नहीं रहा. When you reach to that stage, when you as a patch team reach at that stage, then we'll take a call कि अगर आप comfortable तो इसको कर लेंगे, अगर नहीं है तो इसको skip कर देंगे. ये last part का calculation होगा. ठीक है. Now what I want from you. So I'm a client. What I want, यहाँ तक कुछ पूछना है? पूछना means जो numbers के calculation will come to that. और जो दीपक ने क्वेश्चन पूछा उसको पार्क किया हुआ है. Now anything else in the first round of reading of this? ठीक है, अगर नहीं तो what I want from you. So I'm a client. What I want from you, I want you to build a revenue model, to build a cost model, to build a funding model, to build a depreciation model, to build a debt schedule. ठीक है, ये ऑप्शनल को हटा देते हैं. So what I want you to do, forecasted financial statement. So I want you to give me forecasted P&L. मुझे forecasted P&L चाहिए, forecasted balance sheet चाहिए,
एंड फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, ये चाहिए मुझे। ठीक है, ये होगा आपके इसका पार्ट 1 मॉडल का, लेवल 1 का जो पार्ट 1 है। फिर लेवल 2 में जब हम जाएंगे तो इस मॉडलिंग में हम ऐड करेंगे वैल्यूएशन, एंड देन लास्ट आपका होगा सिमुलेशन, सेंसिटिविटी, सिनेरियो एनालिसिस, एंड देन इसी का लास्ट इसी में ही होगा दिस इज व्हाट इट विल बी। ये मुझे चाहिए आपसे, आई एम क्लाइंट, आई वांट दिस थिंग फ्रॉम यू। सो आप ये सब पहले कंप्लीट करेंगे, ये और ये सब मुझे आप बना के दें। दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज, एंड दिस मॉडल शुड बी सेंसिटिव, ठीक है, ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन लिखा हुआ, बट लेट्स से एवरीथिंग। सो व्हाट डज इट मीन? इट शुड नॉट बी अ स्टैटिक कि आपने बना दिया, मैं कुछ कैलकुलेशंस चेंज करना चाहता हूँ, कुछ चेंज नहीं हो रही है। सो इट शुड वर्क लाइक अ डायनेमिक मॉडल, कि मैं कुछ चेंज करूँ सब ऑटो कंप्यूट हो। ठीक है, सो फ्रॉम एक्सेल पर्सपेक्टिव आपको बहुत ज्यादा हाई एंड एक्सेल इसमें फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे, जिससे ये मॉडल आपका डायनेमिक मॉडल बने। डायनेमिक का मेरा मतलब है कि आप कुछ भी चेंज करें तो ऑटो कंप्यूट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है तो? सर ये फोरकास्टेड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट हुआ? कौन सा कॉस्ट? ये रिवेन्यू के बाद जो कह रहे हैं निकालने के लिए फोरकास्ट, ये कॉस्ट मॉडल है ना, ये कौन सा कॉस्ट हुआ? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड कॉस्ट। फंडिंग शेड्यूल? पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? कोई बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो तो पैसा भी लाते हो ना, यही सब चीज आपको सीखने को इसमें मिलेगी। अगर ये रनिंग कंपनी होती ना, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको सीखने को नहीं मिलता अगर रनिंग कंपनी होता। आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा अगर रनिंग कंपनी। ठीक है, आपको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सीखने को नहीं मिलेगा रनिंग कंपनी होगी। ये आसान हो जाती है कि आपके बना बनाया कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये आसान हो जाता है बिकॉज आपके पास एक बना बनाया कॉन्सेप्ट होता है, और ये तो आप ये होगा ही नहीं कभी रनिंग कंपनी में। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप देखोगे जो रनिंग कंपनी में नहीं होगा, बट यहाँ पे हम कर पाएंगे। एंड आई थिंक वी डिस्कस दैट पीस, एंड दैट्स द रीजन यू डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। बट हाँ, नॉर्मल जो आपने एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखी होंगी उसमें आपको फंडिंग शेड्यूल नहीं दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा, बिकॉज एक बार कंपनी की लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो ये पीसेस खत्म हो जाते हैं। तो करेंगे व्हेन वी कम टू द फंडिंग शेड्यूल, विल सी। हाँ सुभाष। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई स्टार्टअप अगर कंपनी है तो एज ए जैसे हम एनालिसिस करने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमें क्या कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा उनकी तरफ से, क्लाइंट की तरफ से? क्लाइंट ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें शेयर करता है इन अ मोर ऑफ अ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। सो द डील टीम गोज एंड मीट द क्लाइंट, और क्लाइंट कम्स एंड मीट्स द डील टीम, एंड एक जनरली फॉर एन आवर एक डिस्कशन होता है जहाँ पे मैंने एज ए क्लाइंट, जैसे मैंने आपको समझाया हम क्या करना चाह रहे हैं, वो बताता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है इसमें से सम इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बैंकर एज इन्वेस्टमेंट बैंकर या मॉडल टीम आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, पर अभी मैं जो आपको सेकंड और थर्ड राउंड कराऊंगा उसमें सारे नंबर्स हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करें, चाहे क्लाइंट ने करे हो चाहे हमने करे हो। बट सुभाष, टू स्पेसिफिकली कीप इट सिंपल फॉर यू, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये क्लाइंट ने आपको दी है। ओके सर।
हाँ जी, एनीथिंग एल्स? इसका थर्ड पार्ट जो है ट्रांसफर, वो कहाँ पर जाएगा? गवर्नमेंट को चला जाएगा। वो कैसे सर? ट्रांसफर में क्या क्या चीज होगा? सो ट्रांसफर में आपको जो पूरा कंस्ट्रक्शन टोल है वो हैंड ओवर कर दोगे गवर्नमेंट को। उसके बाद आपका उस टोल से कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी उस पे खर्चा होगा, कॉस्ट और रेवेन्यू, दैट विल बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे सर। अगर आप ऐसे समझ लो फजूर, आपने घर बनाया, घर बनाने में अपना पैसा लगाया, तो मैंने आपको लैंड दी। मैंने कहा फजलूर इस लैंड पे अपना घर बनाओ। ठीक है, बना के आप उस घर में 5 साल रह सकते हो। तो आपने 1 साल बनाने में लगाया और उसमें मान लो 50 लाख का खर्चा कर दिया, और अगले 2 साल मैंने कहा आप उसमें रह सकते हो। उसके बाद उस घर से निकल जाना, वो घर मेरा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बीओटी मॉडल। फजलूर कोई डाउट? नो सर। एनीबडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर ये इसने जो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन कर ही लिया है, तो फिर हम उसका फोरकास्टिंग क्यों करें? मत करना, आपको नहीं करनी है तो। जैसे यहाँ सेकेंड वो सेकेंड फोरकास्टेड मेगाथर नंबर में है नहीं ना है फजलूर। ऑपरेटिंग। फजलूर वो प्रेजेंट नंबर है, फोरकास्टेड नंबर नहीं है। आप 2016 में खड़े हो, ये 2016 का नंबर है, फोरकास्टेड नंबर नहीं है, प्रेजेंट नंबर है। डिफरेंस होता है ना प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो ये प्रेजेंट है, हमें फ्यूचर निकालना या एस्टिमेट करना है फ्यूचर। क्लियर है फजलूर? क्लियर है सर। हाँ जी, एनी एल्स? ठीक है। नाउ, so how this transaction then happens after this, or what's the journey that starts after this? जो फर्स्ट मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ, उसमें क्लाइंट ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता है। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट प्ले कर देता है, एंड दिस मॉडलिंग टीम कम बैक नाउ। ठीक है, अब आपकी सेकंड मीटिंग होने वाली क्लाइंट के साथ। ठीक है, फॉर क्लाइंट, फॉर यू द आई एम द क्लाइंट। आपकी सेकंड मीटिंग होने वाली क्लाइंट में, सो बिटवीन मीटिंग 1 एंड मीटिंग 2 यू नीड टू लिस्ट डाउन। सो आप लोग इंडिविजुअली वो क्वेश्चंस लिस्ट करो जो आप क्लाइंट से पूछना चाहते हो। ठीक है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हो, अब सेकंड मीटिंग में क्लाइंट से आप पूछोगे बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द मॉडलिंग फॉर द क्लाइंट। क्लियर है? पार्ट 2 क्या है इसका? So step 2 of this activity is, now you will list down the questions that you as a modeling analyst want to ask from the client. ठीक है, चलिए, I will give you 7 minutes. ठीक है, so you list down your questions and then I will start answering this question again as a client. ठीक है, and then we'll go and start doing this number crunching, and then ये individual numbers कैसे हैं, and then we'll start modeling this in Excel. ठीक है, सो 7 minutes। आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्लाइंट से, क्या क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हो बता, बिकॉज once you seek the clarification, then client will go off and the client will give you some time, okay, 1 month, 2 month, 3 month, depending on the size of the model, and then you go back and present the model. ऐसे होता है real transactions। ठीक है, या टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 7 minutes। आप इंडिविजुअली क्वेश्चंस को अपने नोट पैड या जहाँ पे भी लैपटॉप है वहां पे लिख लीजिए, एंड देन आई विल डिस्कस एट द एंड।
हाँ जी, we'll start now. ठीक है, so दीपक जो एक क्वेश्चन आपने पहले पाक किया था वो स्टार्ट करते हैं, then we'll take others. Yeah, go ahead. पूछो क्वेश्चन दोबारा. What is the technicality behind this execution of phase 1, phase 2? So there is no requirement from a from a government perspective to break this into phase 1 and phase 2. So जो रियल ट्रांजेक्शन हमने किया था, so वो सब अराउंड 39 किलोमीटर ऑड की स्ट्रेच का ब्रिज था. ठीक है, जिसमें से सो आई डोंट नो, हैव यू सीन मुंबई सीलिंग? तो अगर आप लोगों ने मुंबई सीलिंग देखा है, सो उसमें कैसे है, वो जो 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 ब्रिज है और जो टोल है, वो सम पार्ट ऑफ द टोल इज ऑन द लैंड, अबव द लैंड, and another part of the bridge is above the sea. ठीक है, सो ये भी ऐसा ही था. ठीक है, सब 39 ऑड किलोमीटर्स का स्ट्रेच था. ठीक है, और उसमें से सम पार्ट लैंड के ऊपर है, सम पार्ट सी के ऊपर है. तो इसको फेज 1 कर दिया है, इसको फेज 2 कर दिया है. बट जो गवर्नमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन या इंफॉर्मेशन इशू कर दी, उसमें ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं था. ये तो सिर्फ हमने या क्लाइंट ने अपने कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग टीम के ईज के लिए, बिकॉज द इंजीनियरिंग दैट यू विल डू टू कंस्ट्रक्ट दिस पार्ट is far different from what you do for this part. तो उनकी इंजीनियरिंग टीम के ईज के लिए उसने दो पार्ट में इसको करा है कि जो अबव द लैंड पार्ट है उसको फेज 1 कर दो, जो अबव द सी है उसको फेज 2 कर दो. दैट्स इट. Okay, दीपक my thought दरअसल was that we could have after completion of phase 1, we could have generated some amount of revenue, and phase 2 it will be full-fledged revenue. ठीक है, वो एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मॉडलिंग टीम आप प्रपोज कर सकते हैं क्लाइंट को, और फिर हम वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो डिड द सेम वे. हमने कुछ ऐसा ही प्रपोजल दिया था. विल कम टू दैट. बट ये जो इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट ने फेज 1 फेज 2 दिया है. ठीक है, फ्रॉम हिज कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव आप जो बोल रहे हो करेक्ट है. वो आप मॉडलिंग पर्सपेक्टिव से वो हम वैसा प्रपोज, आप वैसा प्रपोज कर सकते हैं. विल कम टू दैट. तो वो जो सेकंड पार्ट अब आपने ऐड किया, इसको इसको अभी करो. व्हेन वी गो टू रेवेन्यू मॉडल आप भी प्रपोज कर सकते हैं. But technically, if the whole bridge will not over, then we'll not be able to, the vehicle will not be able to pass, and we'll not be able to generate the revenue out of that. दिस इज आंसर टू योर सेकंड पार्ट जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा. करेक्ट, क्योंकि फेज 1, सो थिंक लाइक दिस ना, कि आपके दो दो एंड्स हैं, एंड ए है और एंड बी है. ठीक है, आप एंड ए और एंड बी के बीच में टोल बना रहे हो, जिसमें से लेट्स अज्यूम ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है बचा हुआ. तो अगर इतना बन भी गया तो कार आके यहाँ पे रुक थोड़ा जाएगी. ये तो हवा में है ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे. तो वो पॉइंट पे पहुंचने, उसको कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, फेज 2 कंप्लीट तो करना पड़ेगा. Yes. That's why I was asking the technicality of this. That if both the phases, it's been divided by us, that both the phases will complete, then only we can go in operation. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है. रियल ट्रांजैक्शन में कुछ और भी हमने प्रपोज किया था. अगर आप सोच पाओ तो वो अच्छी बात है. विल कैन डिस्कस दैट. अदरवाइज जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा. हाँ जी, सो दिस इज फर्स्ट. हाँ जी, और क्वेश्चन पूछिए जो आप. सो नाउ आई एम अ क्लाइंट, वी आर मीटिंग सेकंड टाइम. The first meeting that we had, I shared this basic information with you. Now you've gone back on your drawing board and have read through or absorbed this information in much more depth. And of course, in that process, you might have come across some queries and questions, and we're meeting second time with the client. Go ahead. Ready, guys? Question?
for clients? Sir, one question can be that if the price of rupees 10 that has been set will not be enough for the profitability, like we will not be able, then what, how will you manage the like cash flows and all? Okay. So रियल ट्रांजेक्शन में ये 10 रुपीज नहीं था. Okay. ठीक है, यहाँ पे x है और क्लाइंट हमें ये Sure. x फाइंड करने को बोलता है कि आप ये x फाइंड करो. तो क्लाइंट हमें बोलता है what client wanted us to do is calculate. अच्छा, so before we go to that part, मैं आपको वो वाला पार्ट भी बता देता हूँ. So गवर्नमेंट ने जिसमें बिडिंग होगी, किसी ने मुझसे अभी तक ये नहीं पूछा इसमें से बिडिंग क्या करनी है. What we need to bid, what number we need to bid. So the government ने जो इशू किया था टेंडर, उसमें ये बिडिंग है. हमें बिड करना है ये टोल चार्ज. Okay. Now what does it mean? The few conditions that was laid down in that टेंडर. फर्स्ट, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उस टेंडर में उनको बिड प्राइस सबमिट करना है और वो बिड प्राइस होगा टोल चार्ज पर व्हीकल. और आपने जो बिड किया और अगर आपको वो बिड अवार्ड होता है देन आप टोल फेयर को चेंज नहीं कर सकते टिल 2024. सो व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल दीपक, ऋषभ और फजलूर, ये 3 एप्लीकेंट्स हैं और मैं गवर्नमेंट हूँ. तो आप तीनों मुझे सबमिट कर रहे हैं बिड. सो लेट्स अज्यूम फजलूर ने सबमिट की बिड 10 रुपीज, दीपक ने सबमिट करी 12 रुपीज एंड लेट्स अज्यूम पारुल ने सबमिट करी 14 रुपीज. ये बिड क्या है? टोल फेयर है. गाइस, यहां तक कोई डाउट? ऋषभ, यहां तक कोई डाउट? ना, अब मैं गवर्नमेंट को किसको प्रोजेक्ट दूंगा, किसको ये बिजनेस अवार्ड करूंगा? जो सबसे The लोएस्ट lowest बिड. bidder. Yes. हाँ, तो मैं फजलूर को दूंगा. यहां तक किसी को डाउट है? अब इसमें चैलेंज ये है कि सो क्लाइंट मेरे पास आया है. सो क्लाइंट, हमारा क्लाइंट लेट्स अज्यूम सी है या XYZ है हमारा क्लाइंट. करेक्ट. क्लाइंट आया, कहता है कि मेरे को एक ऐसी अमाउंट यहाँ पे आप फाइंड आउट करके दो जो मैं बिडिंग में सबमिट कर सकूं. अब द प्रॉब्लम विद द इन्वेस्टमेंट बैंकर इज, अगर ये बिडिंग को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाता है तो ये बिड जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है. और अगर बिडिंग के जीतने के चक्कर में इस अमाउंट को नीचे ले जाता है तो क्लाइंट को लॉस हो सकता है. एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. दिस इज वेयर द कॉम्प्लिकेशन विल कम इन व्हेन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस मॉडल. दिस इज नॉट इजी मॉडल लाइक दिस कि आप के पास जो कंस्ट्रेंट आपके इसमें जनरली आपका जो मॉडल बनाते हैं आपको प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से कंस्ट्रेंट एक होता है. ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, नीचे लेके जाओगे, एक ही कंस्ट्रेंट होता है. यहाँ पे दोनों तरफ कंस्ट्रेंट्स है. आप ऊपर लेके जाओगे तो आप प्रोजेक्ट हार सकते हो. if you bring it down to win the bid, probably you might end up in the losses as well. So ये हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, इसलिए मैंने x बोला. यहाँ पे ये x है. अभी ये client wants you to find out a number which takes care of these both problems. यानी ऊपर और नीचे के दोनों के somewhere कि they are able to model a number which can take care of the situation. That's where the complication will come from the calculation. Yes, client has to tell us that what is his expectation on profitability part. Then only it can be evaluated. वो मुझे simulate करना है from modeling perspective for his investors. Of course, some information will happen with the shareholders. ठीक है, जो information उसने मुझे pass on कर दी है इस यहाँ पे, ये बार मैंने अभी डिस्कस नहीं करी है बिकॉज लेवल 2 में है ये. अगर आप देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन सम शेप एंड फॉर्म में उसने मुझे पास ऑन कर दी है.
करेक्ट दीपक? Yes. ठीक है, हाँ जी, और हेलो क्या क्वेश्चन है? यस सुभाष, गो अहेड। सर, क्या इवोल्यूशन भी हमें करके देना है यहाँ पे, जिस सिनेरियो बन रहा है, या इसका मतलब इवोल्यूशन भी हमें करना होगा? इवैल्यूएशन या वैल्यूएशन? वैल्यूएशन, सॉरी वैल्यूएशन। हाँ, रियल वर्ल्ड में तो आईबी करता है ना। अगर यू एज अ बैच डोंट वांट टू डू दिस, आई कैन स्किप दैट पार्ट, दैट्स ओके। रियल वर्ल्ड में आईबी करता है। तो ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं करना है तो इसको हटा सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी, ये हटा सकते हैं। इतना ही कर लो आप लोग फिर, अगर आपको इतने में। What we are skipping? Means So, what we are not. तो ये जो है वैल्यूएशन सिमुलेशन, ये करना चाहते हो या ये हटाना चाहते हो, ये पूछ रहा We हूँ। want to do it. We want to do it. I want to do it. सर करना ही चाहते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस, कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे क्लाइंट की मीटिंग के लिए? Considering all the inputs for design aspects and all that been there with us. So when you say कुछ भी नहीं design है। aspects, what does that mean? Where the toll has been, where we are doing it, what the condition of that area, that if we are going into the sea to build something, what is the condition of that, bridging between land and sea, what are the soil conditions and all that. Is that required for us or is that required for the engineering team of the company? आप फाइनेंशियल मॉडल एनालिस्ट हो, आपको सॉयल की मॉइस्चराइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, वो वाटर लेवल, उसमें इंटरेस्ट है, या वो इंजीनियरिंग टीम जो कंस्ट्रक्शन करेगी उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन? Yeah, that will impact the project cost if we are saying that project वो cost is इंजीनियरिंग टीम की freeze. कॉस्ट निकाल कर दे दिया ना अभी। Okay. तो ये नंबर्स जो आए हैं इंजीनियरिंग टीम के पास गए, सो हाउ डिड इट वर्क इन दैट ट्रांजैक्शन? सो ये जो ब्रिज है ये पर्टिकुलर हाइट पे बनता है, ठीक है, वो हाइट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये अबव द सी किस हाइट पे बनेगा, अबव द लैंड किस हाइट पे बनेगा। सो आई डोंट नो आप लोगों ने कितना कंस्ट्रक्शन बिजनेस देखे हैं इस तरीके के, बट अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, मान लो ये लैंड है, ठीक है, माय ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड बट जस्ट बेयर विद मी। सो अब मुझे एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, और वो ब्रिज बनेगा लेट्स अज्यूम ऐसे, इस पे एक पिलर्स खड़े होते हैं ऐसे, आपने देखा होगा मेट्रोज दिल्ली में, और इस पे फिर रन करती है मेट्रो, करेक्ट, कार्स। गाइस यू विद मी ऑन दिस? Yes. नाउ ये जितनी हाइट बढ़ जाती है उतना कॉस्टली हो जाता है कंस्ट्रक्शन, हाँ या ना? Yes. जितनी हाइट पे आप बनाते हो ये उतना कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज उतना टाइम लगता है, उतना आपके रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको बनाने की कॉस्ट लेट्स अज्यूम 1 रुपी है, और अब मैं कहता हूँ ये अबव द सी बनना है, अबव द सी में ये कॉस्ट 10 टाइम्स या कुछ 9 टाइम्स बढ़ जाती है इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में, तो वो 10 रुपीज हो जाती है कॉस्ट, क्योंकि सी के ऊपर बनाना मोर कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत वो वाटर की वजह से काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। Guys, you with me on this? Yes. तो ये जो हाइट की इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन है कि इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, इस ब्रिज की विड्थ क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, आप कितने पिलर्स लगा सकते हैं, लैंड एक्विजिशन है, वो सब क्लियर करके गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग टीम को टेंडर में लिखा होता है, जो गवर्नमेंट टेंडर इशू करता है उसमें सब लिखा होता है। वो इंजीनियरिंग टीम के पास गए, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट एसएमईज ऑन दैट, और वो इंजीनियरिंग टीम ने एब्जॉर्ब करके अपना जो भी sorry, where is my सॉरी, इंजीनियरिंग टीम ने एब्जॉर्ब करके मुझे बताया कि यार इस हाइट पे और इस तरह का स्पेसिफिकेशंस में बनाने के लिए
मुझे इतना टाइम और इतना कॉस्ट एस्टिमेटेड, एंड दैट इज व्हाट दे हैव गिवन टू अस. और मैं उस पर रिलाई करूंगा बिकॉज मेरे को एक्सपर्टीज नहीं इंजीनियरिंग की. फ्रॉम आईबी पर्सपेक्टिव वी डोंट डील इनटू द इंजीनियरिंग वर्क. द क्लाइंट हैज देयर इंजीनियर्स हु स्पेशलाइज इनटू दिस पीस. तो वो कॉस्टिंग और मंथ का जो है वो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का उन्होंने हमें दिया. वो कैसे निकालते हैं हमने वो भी सीखा था उनसे बिकॉज वी वांटेड टू डू सम सिमुलेशंस अराउंड दैट. वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं. बट ये जो नंबर्स दे रखे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये क्लाइंट से आए हैं और टाइम. तो इसलिए मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें कि किस हाइट पे बनना है, किस किस लाइन पे बनना है, किस सी का है, क्या उसके सी लेवल्स पे है, वो जो वाटर है कितना सॉल्टी लेवल होता है उसका. बिकॉज वो जितना सॉल्टी होता है उतना आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बढ़ जाता है बिकॉज उसमें आप फिर बहुत सारी और चीजें नहीं कर सकते. सो वो सब चीजें इंजीनियरिंग टीम ने टेक केयर करी. Does this cost also include the cost of incorporation as they have to incorporate in Singapore? Sorry for my. वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, नहीं इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड है. इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड. So the modeling team has to decide, has to model for that as well. This is where it comes now कि आपको इस मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजाइजेशंस भी करनी पड़ेगी. दिस इज वेयर जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट सीखने को मिलता है फॉर स्टार्टअप वो मिलता है इसमें. सो नाउ ऑल दिस कम्स बैक टू द सेम पॉइंट. रियल वर्ल्ड में अगर आप एक कंपनी को, जो सिंगापुर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, एक यूके में पेरेंट कंपनी बैठी है, अगर उसको सिंगापुर में अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसका जो खर्चा है और जो टाइम है वो मैसिव है. ठीक है. सो व्हाट वी प्रपोज टू द क्लाइंट that rather than incorporating company in Singapore, let's go with an SPV. ये आईबी ने प्रपोज किया था क्लाइंट को कि एसपीवी फ्लोट करते हैं rather than incorporating full-fledged company. So we'll discuss SPV क्या होता है, क्या उसके compositions होते हैं, क्या advantages हैं. We'll discuss at that stage when we reach that stage. But to answer your question, this doesn't involve the incorporation cost. The first proposal from the client is yes, let's incorporate a company because the incorporation of the company is too costly and time consuming and we might not have that much of time because वो bid करनी है, bid एक particular timeline में होती है. So the easiest strategy or what are the other options वो आप as an analyst client को बता सकते हैं, as a modeling team आप उसको बता सकते हैं. तो इसमें हमारी so IB की legal team involved होती है इसमें because this is law, correct? This is not finance because you need to take care of the law of the company. So we onboarded a couple of lawyers on the team. Okay, and then finally what we propose to the client in that transaction is that rather than going for a full-fledged incorporated company, let's go with an SPV. SPV क्या होता है? Special purpose vehicle होता है. ठीक है. In certain countries, the law allows that if you want to open an entity or you need a legal entity for a specific purpose, then rather than floating a full-fledged company, you can float an SPV. It works exactly like in companies. The only difference is the purpose is limited and what's been defined in that memorandum. Okay, that's sort of a JV. नहीं, JV और SPV में लीगली डिफरेंस होता है बट वो डिफरेंस अपने किसी काम का नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो लॉ डिफरेंस है. तो बट हम मान के चल सकते हैं अगर आपको JV आसान लगता है कि JV, बट इट्स नॉट लीगली, इट्स नॉट JV. JV में क्या होता है दीपक, से आप किसी के साथ एक पार्टनरशिप में एक एंटिटी क्रिएट करते हो. यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप नहीं हो रही. यूके कंपनी फुल फ्लेज 100% ओनरशिप में अपनी एक एंटिटी फ्लोट कर रही है सिंगापुर में. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसपीवी एंड जेवी. जेवी में दो लोग आके स्टार्ट करते हैं. ठीक है. पारुल, does this answer your question जो आप पूछ रहे थे? Yes, it implies that we can also advise the client
as per the available timelines that what we can You have to, you should. propose. तभी क्लाइंट आपसे वो रिलेशनशिप बनाता है, फिर क्लाइंट आपको जो फ्यूचर बिजनेस है वो आपके पास लेके आएगा. Yes. So you have to do everything. You have to do everything what you can do to increase the profitability of the company. You're allowed to do anything or suggest anything to the client which increases the profitability of the company, for which means we decrease cost, increase revenue. वो आप सब propose कर सकते हैं client को. So go out and think as much you can, and you can come back to me. Me means I'm client, right? And say, okay, ये कर सकते हैं, revenue बढ़ जाएगा, ये कर सकते हैं, cost कम हो जाएगा, and then stuff like those. Those flexibility are possible in a startup only, because आपका business का जो अभी जो सेटअप है वो क्रिएट नहीं हुआ है, सो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. Okay. So we are free to determine the method of depreciation. हाँ, as long as it's logical. Okay. Yes, Shrikant, the answer to this question is yes. We have to consider the land of the law also. Of course. तो इसलिए मैंने कहा कि as long as आप Which लॉजिकल हो. has to be, this depreciation has to be accounted in means whatever accounting standards they are handling there, we have to abide by that also. Correct. हाँ जी. और We can also ask how you want to raise the equity, the private equity. ठीक है, आप पूछ सकते हो मुझसे. सो मेरा एज अ क्लाइंट मेरा आंसर आपको ये है कि in this project we are expecting somewhere around 85 crores as an equity funding. So this is what we as a parent company will do in this SPV or this company in Singapore. So parent जो UK में बैठा है वो equity fund करेगा. Okay. हाँ जी, और कुछ? Guys, come on, ये important है. आप I think guys please अगर आप genuinely चाहते all the हैं aspects related to FDI, CCI and FEMA will be there, will be taken care by the IB. by IB, correct. तो IB की टीम में एक लॉयर होगा, ठीक है, जो ये लॉ ऑफ द लैंड को टेक केयर करेगा. बट एज ऐसे रियल ट्रांजेक्शन सिंगापुर मार्केट्स का था, तो ऑफकोर्स वहाँ फेमा वगैरह नहीं, वहाँ पे अदर रेगुलेशन या लॉ है. बट योर पॉइंट इज कि जो भी कंट्री के लिए आप कर रहे हैं ये, उस कंट्री का जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी, yes, वो IB has to take care of that, and for those IB will have some SABs on the team. Yeah, because it can create a huge risk. Yes, it can. Not only from an FD and stuff like this, from a taxation perspective, from a government approval perspective, ये सब आप क्लाइंट के लिए फैसिलिटेट करते हो. बट अभी तो वो बहुत एट अ लेटर स्टेज है. अभी तो आप एग्जीक्यूशन कुछ नहीं कर रहे हो. अभी तो आप सिर्फ ऑन बोर्ड एक कैलकुलेशन कर रहे हो कि यार यहाँ पे अगर हमें बिडिंग करनी है कि नहीं करनी है तो कितने की करनी है. बस उसके बाद अगर आपको वो अवार्ड हो जाएगा तब वो पार्ट आता है. बट यस, ऑल दीज आर मैनेज्ड बाय द क्लाइंट. बट हम ये इस फिगर पे तभी अराइव हो पाएंगे जब हमारे पास एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन होगी of the land from of a law, costing perspective. because Perspective. Yeah, because we will not arrive correct. Correct. वो सब इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई सम पीस ऑफ सम शेप एंड फॉर्म में वो गिवन है यहाँ पे. विल कम टू दैट व्हेन वी रीच दैट. और once you win that bid,
देन उसका एग्जीक्यूशन भी उस कंप्लायंस में होना चाहिए, वो भी एक पार्ट आता है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? Cost of equity includes what? अभी ये नहीं सिखाया, ये इग्नोर कर दो, मैंने सिखाया ही नहीं, ये level 2 का है, we'll do that when we reach the rest stage. As I said, this model that I've created or picked for your batches is not a very small part of it. जैसे मैंने कहा कि ये पूरे जर्नी में चलेगा, ये आपका level 1 है प्रोग्राम का, ये आपका level 2 है प्रोग्राम का, और ये आपका level 3 है। तो यही मॉडल आप देखोगे पूरा एंड तक हम रन करेंगे। इसमें काफी सारे पीसीज हैं पारुल, जो अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, वो लेवल 2 में लेवल 3 में आने वाली है, तो इसलिए अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा। और आपका उसका मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया नहीं, तो वो बाद में करेंगे। Okay, understood. ये जो पार्ट है ये अभी हमने नहीं किया। ठीक है, लास्ट टाइम एनीथिंग एल्स गाइस? ठीक है, so try and absorb this, try and think over this today, and tomorrow कुछ और question आता है, I can pick that. Otherwise from tomorrow what I'll do, I will start doing the number crunching on this. So what does that mean? ये each of these numbers कैसे आते हैं, कहाँ से आए, कैसे कैलकुलेशन करा, क्लाइंट ने क्या किया, क्या लॉजिक लगाया, वो सब आपको पहले बताऊंगा, ठीक है, कल। और फिर हम इसको एक्सेल में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ मॉडलिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। Can this word be shared? हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज अगर नहीं शेयर होगा तो मैं आपको ये किसी शेप एंड फॉर्म में दिलवाता हूँ, ठीक है। पॉइंट नोट में भिजवाता हूँ, करवाता हूँ। और अभी दीपक, अभी के लिए तुमने बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया, राइट, फॉर यू टू थिंक बिटवीन टुडे एंड टुमारो क्लास। सो आई एम नॉट श्योर कि इमीडिएटली आ पाएगा कि नहीं। हाँ, बेसिक consider these numbers and all that, the basic ठीक है, कोई बात। हाँ, तो आप नोट कर लो, बेसिक नंबर्स प्लॉट कर लो ऑन ए नोट पैड, मैं आपको दे देता हूँ, ये लीजिए, बेसिक नंबर प्लॉट कर लो, एंड देन आई विल पैरेलली वर्क की आपको भिजवा सकते हैं, बट आई डोंट नो उस पर टाइम लगे तो आई डोंट वेस्ट टाइम। तो आप नंबर्स प्लॉट कर लो, चाहिए तो नोट करने कर लो, छोटा सा पैराइज तो है। हाँ, पर कुछ पूछ रहे थे आप? So the purpose of modeling would be like we'll prepare the model for from 2016 to 24, and we will derive at a price, or we will take the price as given. हम सब कुछ को ड्राइव करेंगे, नथिंग इज गिवन, प्राइस कोई गिवन नहीं है यहाँ पे। So we will prepare as from the prospect of bidding only, like या initially. फिर उसका वैल्यूएशन भी करेंगे, करेक्ट, फिर उसका वैल्यूएशन भी करेंगे, Okay. ठीक है। Yeah, noted. I've taken the screenshot of this. ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस? ठीक है, इन केस नो क्वेश्चन विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। चलिए, थैंक्स, बाय।